everyone. So good morning to all of you guys. I hope you all are good. Welcome to you all on GATE Study 5 Plus. In this session, we are going to continue the Control System Engineering Services PYQs solution. Okay. So till the last session, we have seen the ESE PYQs based on the chapter number 1, that is Basics of Control System, Transfer Function Approach, SFG approach. After that, Time Domain Analysis, First Order System, Second Order System. And now today class will discuss about the steady state error. In next class, we'll discuss the Routh-Hurwitz method, then root locus, like that. If you want that, we'll do this series continuously. And if you want that the lecture series is going to be continued, then please share this and please try to attend in a live manner so that maximum students can get benefited. Okay. Chali guys. So let's start the session. Before going to start, if you are looking for the comprehensive courses of GATE and ESE, then you can join our elite batch. Okay, sorry, what I'm doing. Yes, you can visit our website, guys, Study 5 Plus. Here, if you are from any branch like EC, electrical, mechanical, civil, DA, chemical, okay, petroleum, mining, whatever your branch, if you want to learn engineering, maths and general aptitude in a more structured and unique way, then you can join our Arjuna batch. The Arjuna batch, you will get 180 hour plus live classes, recorded videos, GATE PYQ 2500 plus, chapter wise practice question, chapter test, subject test, short trick, recorded videos, one-to-one mentorship, marathon revision, and you will get the 1 year validity, or after till the you will get the access till the GATE exam, even after the GATE exam. If you will enroll in this course, right now we are having a offer. When you will use this code PS25, it is showing right now 4,000, but once you will use the code, it will become 3,000. Similarly, guys, if you are from EC Electrical Iron branch, then you can join our elite batch. We are having subject-wise combo test also, as well as we have also, my dear student, the सब्जेक्ट वाइज पैकेज. तो आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज पैकेज भी मिल जाने वाले हैं. इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रैंक, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अगर आपने पहले गेट का एग्जाम दिया है, एंड इफ यू विश टू लर्न पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन यू कैन डेफिनेटली join our subject wise package. The amount is only, the actual price is 5,000, but right now 2,500 rupees, and here you will get all the live class access, recorded videos, practice question, chapter wise test, subject wise test, GATE PYQs of EC electrical iron, wherever common subjects are there, you will get the whole PYQ. Other than you will get the one-to-one mentorship, as well as you will get the 1 year validity only in this amount, 2,500 rupees. And the signals and system subject, we are going to be start from the 3rd May, and this control system, same features, we are going to start from 29th of April. All the courses will be bilingual, guys, where in whichever state you belong to. As far as classes are concerned, language will not be the barrier. हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश में both the students के लिए comfortable रहने वाला है. और whenever you will whenever you ask to repeat us, or mentors will repeat the concept as well. Okay बच्चों, तो आइए बात करते हैं. And today's session we are going to discuss, and you have any query, you can directly contact us, guys. We have here contact us. So if you have any query regarding the courses, कि सर सिलेबस कब तक खत्म हो गया, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, सब लिखा है. उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है, you can directly contact on this number, or you can write us on this mail. चलिए, so let's start today's class. As I already told you, today's class is dedicated for steady state error. So we'll solve some problems which is based on the steady state error. तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. This is the first question. A unity feedback control system. Let me check. Meanwhile, you can read the question, guys. You all should read the question and try to attempt at least. Chali. So if I will attempt this question, what is examiner saying? A unity feedback system, it means H of S given to me as a 1 only. The open loop transfer function, this is the open loop transfer function G of S. Then the error constant Kp, Kv, Ka respectively. And do you know what is the Kp? Kp is the positional error constant, and the formula is nothing but limit S tends to 0. G of S, H of S to 1 hai because of unity feedback. Similarly, if I talk about what is Kv, sir, velocity error constant, limit S tends to 0, S into G of S.
And if I talk about Ka, that is acceleration error constant, that will give me limit s tends to 0, s square into g of s, and in all the case unity feedback, so hs is 1. Now tell me guys, just use your presence of mind and just solve this by verbally. No need to put the values here, because simple by simple concept we can say that sir, here limit s tends to 0. It means wherever s we need to put s equal to 0, and we can clearly observe that this s square dominate in denominator. Here s square term, because the system is having type 2, because the system is having type 2, two poles lie at origin, will make my denominator term s is dominating. Even I will put s equal to 0 into something 0 something into 0 infinity. So क्या kp का value infinity आएगा? Yes sir. And because here options are such that the options give me opportunity to eliminate BCD directly. So as far as competition exam is concerned, you should not waste your time. If you are able to comment on the options, and if you are able to comment on the out of 4 options, if you are able to eliminate 3 options, even in the 25% solution, अभी हम final solution पे नहीं पहुंचे, we have just started the solution, we have just solved 25% of the actual solution, but still उस solution ने हमको allow किया कि हम 4 में से 3 option को eliminate कर पा रहे हैं. If you are able to eliminate 3 options among 4 in the MCQ, then no need to see the 4th option. But still, because we are in the learning stage, I will just check the KV, KA value also. So what is KV? Limit s tends to 0, s GS. This is the entire GS. So don't you think, sir, this 1s and this is s square is waiting in denominator. 1s will get cancelled. Still 1s will left in denominator, and that will make our denominator term dominating as far as s value is concerned. तो यहाँ s dominate करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक s ओपन लूप पोल एट ओरिजिन है. तो 0 into something 0 something upon 0, again it will make the infinity only. Similarly guys, if I talk about k value, here you can easily see कि sir, here is s square now. So this s square and this s square entire cancel out. Even if I will put value here, it will look like this. Limit s tends to 0, s square. This gs entire value you need to substitute here. So when you will put, you will get k into s plus 2 upon s square dot s square plus 7s plus 12. And don't you think here s square get cancelled? So once you will put s equal to 0, what you will get, guys? This is 0, this is 0, this is 0. So you will get 2k upon 12, and that is nothing but k by 6 only, and k by 6 only. This is k by 6, and this k by 6 is exactly mentioned in the option number A. This is exactly mentioned in option number A, guys. I hope this is crystal clear. I hope this is crystal clear. So this is the question that has been asked in 2018 EC. We have solved this question. Correct answer is option number A for Ahmedabad only. Very easy question, I must say that. Okay. Now again, one more question that has been asked in ESE 2018. For the feedback control system shown, if the steady state error is 20%, already steady state error is given to you. We have seen here unity feedback system HS equal to 1. Now you need to, whenever unity feedback system is there, you need to comment on type and the input of a system, because we should always try to use this table as far as steady state error questions are concerned. We should always try to use this steady state error concept, where the table allows you to solve the questions verbally or without touching notebook and pen. Now tell me guys, here I will make the entire table. Okay, chali. So now you should write here. Here we'll write type 0, type 1, type 2. Here we'll write with respect to step input or ramp and parabolic. Okay. Okay guys, so chal, I will make again this. So here I will make step, and here I will make for the ramp. Okay. Chal. So what you should write guys here? First of all, this table says that type 0, type 1 and type 2. What do you mean by type 0, type 1 and type 2? This is a table dedicated for the steady state error.
and provided that the unity feedback system, UFB unity feedback system, it means HS equal to 1. Now, do you know why when the system will be type 0? When we don't have any single pole lie at origin as far as open loop transfer function is concerned. So for the type 0 system, no open loop pole lie at origin. For type 1 system, one open loop pole lie at origin. For type 2 system, two open loop pole lie at origin. Now tell me guys, steady state error for type 0 system and for unit step input. And here I am writing for the step input, here I am writing for the ramp input, and here I should write for the parabolic input. Now tell me guys, for the type 0 and step input, the steady state error is nothing but 1 upon 1 plus kp. Here we have infinity and infinity. Type 1 step input will always be 0. Here we'll have 1 by kv. Here we'll have infinity. Similarly, for type 2 step input will be 0, 0. And for the type 2 parabolic nature will give you 1 by ka. Here we are providing that unit ramp, unit step, unit ramp or unit parabolic. If we have some magnitude of a, then that formula can be a by, formula can be a, formula can be a. Okay guys, if a any constant value is given to you as a multiple of input, then that a will directly reflect in this table as well. Now directly tell me here, can you please comment on the type of this system? We know that in the open loop system, in the closed loop, this closed loop system, this is working as a forward path parameter, and if I will consider only this part, this will give me OLTF, this will give me OLTF, this one part. And we know that in a control system, whenever two or more blocks are in cascade, we have to take the product. तो यहाँ पे जो GS का value आपको दिख रहा है, what is the GS value here? The product of these two. So when you will take the product, you will get k into 1 plus 4s and 1 plus s. And when you will observe carefully, you will see that the system is having type 0 system. The system is type 0. Why type 0? Because there is no open loop poles lie at origin. There is no open loop poles lie at origin. It means we can simply say that examiner is asking for the steady state error for the unit step input and for the type 0. It means if you will try to visualize the table, in the table first row says that type 0 and first column says that step input. Type 0 step input, type 0 step input will meet at 1 upon 1 plus kp. I will show you here. ये देखो, type 0 step input meet at a upon 1 plus kp, and here because of unit step value is given, so a value equal to 1. So for this particular question, my steady state error formula is nothing but 1 upon 1 plus kp only. Now, because I am explaining right now in a conventional way, so that is why each and every step I am explaining. I am considering that so many students are learning from the first time or watching the session first time. आप में से बहुत से लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे जिनको ज्यादा कुछ नहीं पता, so that is why I am starting from very zero level or scratch. Okay, so now dear student, KP, what is the KP formula? So when you will apply the KP formula is nothing but sir, limit s tends to 0 g of s, and if I will apply this in this GS expression, if I will put s equal to 0, don't you think this is 0, this is 0, 1 into 1, k upon 1 is nothing but k. So what is the learning guys? One more important observation, it is all about the game of strong observation. If it is noted that whenever in the OLTF, that is GS, if it is given in the time constant form, what is the time constant form? 1 plus TS is the time constant form. Here the 1 plus 4 as time constant form, 1 plus as time constant form. Whenever the GS is given in directly in the time constant form, then KP will be K, KB will be K, and KA will be K for the step input, ramp input, and parabolic input respectively. You can save your time even. You can definitely save your time even. Okay. Chaliye guys. So let me show you some more question here. Let me show you some more questions. Yes. Yes, guys. So chaliye. Yes, yes. So let's solve one more question here.
Okay, so I hope this part is visible to you. Little bit some light issue is there, no problem, you can just manage. So now tell me, the steady state error is nothing but 1 upon 1 plus kp now. The steady state error is nothing but, sir, 1 upon 1 plus kp only. And because of the steady state error 1 upon 1 plus kp, it is given to us as a 25%, 20%. So can I use this formula here only? This space is sufficient now. 1 upon 1 plus kp. What is the kp? 20% means, is it 20 by 100? Yes, sir. 20%, 20 by 100. And 1 upon 1 plus kp is what? Kp is k only. Should I write 1 plus 1 by k? Yes or no, guys? Now, can you solve this question? फटाफट से बताओ, can you solve this question now? So when you will multiply inside the bracket, even you can cancel this 20 to 100. Is it 5? 1 by 5 only. 1 by 5 only, sir. So you will get here 1 by 5 is equal to 1 upon 1 plus k. Do cross multiplication. So 1 plus k equal to 5 only. So k equal to 4 only. So correct answer for this question is nothing but option number D for Delhi. Correct answer for this question is nothing but option number D. I hope this is fine. This is crystal clear. So can I use this formula here only? This space is sufficient now. Chali. Now we'll go for next, guys. One more question is waiting for us. Now here this time you have to find out the error in terms of percentage. This is also a engineering services question in 2018, but this is asked in EE branch. Okay. So अभी क्या बोल रहा है student? Is this time already the G of S value is given to you, H of S value given to you, and simply asking for the error. So it is nothing but sir type and input. So first thing, whenever error question will come and if it is noted that unity feedback system, then you need to observe two things first. First is type of a system and second is the input of a system. How to identify type of a system? By observing the number of open loop poles at origin. उस ट्रांसफर फंक्शन के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितने पोल ओरिजिन पे है. By observing that you will get to know कि how many type of a system, how many poles are exit origin. That will decide the type of a system. Now tell me, ESS is nothing but 1 upon 1 plus kp only, sir. What is kp, guys? What is kp? Kp is nothing but, sir, limit s tends to 0, g of s. And do you know here this entire value is g of s, multiplier only. So I am putting this value g of s. So if you wish to put this value here only, then you will get limit s tends to 0. Limit s tends to 0. This entire value you need to put. So it will be 5 upon s plus 10. And here you will get 3 upon s plus 2. So when you will put this value, guys, what you will get as a kp, limit s tends to 0 means, don't you think this is 0, this is 0? So this will be 5 3 is 15 and 10 2 is 20 only. Yes or no? 5 3 is 15, 10 2 is. So it will be what, sir? It will be 3 by 4. kp value 3 by 4 आया आपका? Yes sir, 3 by 4. और error क्या है? Because input दिया है unit step input and type of this system is 0 only. System का type 0 है because no open loop pole at origin. So I simply need to put the value here 1 upon 1 plus. Is it 3 by 4, guys? Can you please check here? Is it 3 by 4? Yes, sir. So when you will put, what you will get after LCM, don't you think 4 will come in the numerator and 4 plus 3 7 only? Is it 4 plus 3 7 after LCM? After LCM, and that you need to find in the form of percentage. So actually you need to calculate 4 by 7 or 400 by 7. So you will get in the form of percentage. Yes or no, बच्चों? So how much you will get? बताओ जरा फटाफट से. अब देखो 4 by 8 होता ना तो 50% होता. 4 by 8 होता तो 50% होता. अगर 8 से वैल्यू बड़ा होता तो 50 से कम होता. अब 4 by 7 है, इसका मतलब 50 से हल्का से ऊपर होगा. बोलो बच्चों, 50 से हल्का से ऊपर होगा. यस और नो? तो अप्रोक्सीमेशन से भी आप जा सकते हो, और अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहो कि सर हम तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. इन द गेट एग्जाम कैलकुलेटर इज अलाउ, प्यारे बच्चों. तो कैलकुलेटर जस्ट नीड टू कैलकुलेट, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना. तो 57.14 आया एग्जैक्ट. 57.14 एग्जैक्ट आया. बट लॉजिक से भी आप बोल सकते थे कि सर 4 by 8 होता है 50%. तो 8 से क्योंकि कम है तो 50 से हल्का से ज्यादा होना चाहिए था.
और 50 से हल्का ज्यादा, ये भी 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम, तीन ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गए। करेक्ट आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली। So this is the best approach as far as competition exam is concerned. You should always think and you should always give preference to save your time, and you should try to solve the question as early as possible. In the competition exam, it matters a lot how much time you are taking to solve the question correctly. Yes or no? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप हवा में उड़ा सकते हो। देखो 2019 का क्वेश्चन है। 19 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? A unity feedback negative system open loop transfer function GS is nothing but K upon S into S plus 2. The closed loop system has a steady state error, unit ramp error. Steady state unit ramp error is 0.1. Oh. The value of gain K should be. Now tell me what is ESS? Sir, we know that, sir, for unity negative feedback, for the ramp error, steady state unit ramp error, it will be 1 by kV only, sir. 1 by kV. And this is given to us. 1 by kV is given to us 0.1. Okay, sir. This is given to us as a 0.1. And we know that steady state error will be represented as a 1 by kV, and where kV is what? We know that where kV value is nothing but kV, not kp, kV. kV is nothing but limit s tends to 0 s into g of s, and once you will put this value limit s tends to 0, या आप gs का वैल्यू यहाँ फटाफट से पुट करिए. So once you will put now, this is s also, so ss get cancel. So what is the kV value you will get, guys? क्या आपको kV का वैल्यू 1k by 2 मिला? Yes sir. And we know that कि सर एरर जो है वो 1 by kV है सर, 1 by kV है सर, और ये वैल्यू कितना दिया है सर? 0.1 दिया है सर. तो क्या kV का वैल्यू पुट कर दिया जाए? k by 2 equal to 0.1. Only solve this equation, you will get the answer, guys. So 1 by k by 2 is nothing but actually 2 by k equal to 0.1. Then you will cross multiply. So k equal to 2 by 0.1 is it nothing but k equal to 20. K equal to 20. Easiest question ever. If such type of problems will come in the engineering services, all these engineering services PYQs are equally important for the GATE aspirants or AE aspirants. If you are planning to prepare for the GATE exam, or if you are planning to write any AE exam, then all these questions are very much important for all the competition examination wherever control system subject is mentioned in the syllabus. जहां भी control system subject GATE syllabus में है, जहां भी स्टेडी स्टेट एरर गेट सिलेबस में है या एग्जाम सिलेबस में है, वहां आपको ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्प करने वाले हैं. ये वीडियोस आपको हेल्प करने वाले हैं. ओके गाइस, चलें हम आगे की तरफ. सिस्टम का टाइप 0 है. चलिए, आई थिंक वॉइस इज क्लियर. वॉइस में कोई इको नहीं है ना बच्चों? वॉइस में इको नहीं है. चलिए, फॉर ए टाइप 2 सिस्टम द स्टेडी स्टेट, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट टेबल से होगा. नो नीड टू टच योर नोटबुक एंड पेन. फॉर ए टाइप 2 सिस्टम, द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैंप इनपुट इज व्हाट. नाउ जस्ट गो टू द टेबल. टाइप 2 मतलब लास्ट रो, टाइप 2 मतलब लास्ट रो, और स्टेप और रैंप मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम. देखो जरा, इज इट 0 ओनली और नॉट? आई विल शो यू. ये देखो ना, ये देखो ना, टाइप 2 सिस्टम लास्ट रो एंड पूछ रहा है स्टेप इनपुट और रैंप इनपुट. आंसर इज 0 0 ओनली. आंसर इज 0 0 ओनली, ओनली 0 0. नाउ 0 0 मींस चेन्नई CSK. So what is the point I want to tell you guys here? कि you need to visualize the table. अब in the competition exam you are only able to visualize the table अगर आपने उस टेबल को प्रैक्टिस में बहुत बार, एटलीस्ट 10 बार आपने बनाया है और आपने रिकॉल किया, आपने रिवाइज किया है. If you multiple time, if you will recall the concept and the multiple time revision if you have already did in the practice, then only in the examination hall you are able to visualize the concept and no need to touch notebook and pen. Even exam में आपको टेबल बनाने का जरूरत नहीं है. अगर एग्जामिनेशन हॉल में टेबल बनाने का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में और रिवीजन में कमी रही है. yes or no? So ये क्वेश्चन को अगर आप हवा में नहीं उड़ाते हो, then you are not deserving student to make a
double digit rank in the GATE and you are not deserving to make a good rank in the engineering services. बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल 10 सेकंड में करना होगा. अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी 2 मिनट में करते हो तो उस सारे स्टूडेंट से आप पीछे रह जाते हो जो ऐसे क्वेश्चंस को 5-10 सेकंड में कर देगा. ये सुनो बच्चों, चलिए आइए एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन सेज दैट engineering services ESE 2016 the closed loop transfer function of a this question I will explain you by using 2 methods. What is my intention behind that? I want to make your concept strong. तो हमारा जो डिस्कशन पार्ट होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हम मेथड नंबर 1 से बड़े ही आसानी से कर लेंगे, बट मैं मेथड नंबर 2 भी आपको यहां दिखाऊंगा सो दैट आपके पास मल्टीपल वेज हो. आप अगर कन्वेंशनल पेपर में क्या प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज तो भी हेल्प करेगा वो थॉट प्रोसेस, और वो कॉन्सेप्ट आपको गेट में भी कॉन्फिडेंस देगा. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a closed loop transfer function of a unity feedback system. So once you will see this you will reply कि सर ये तो standard second order system है, and the standard second order system diagram is look like this. Standard second order system closed loop system diagram is look like this only. So अगर आप यहाँ देखोगे इसको ऐसा तो आपको दिखेगा सर ये होता है सर ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s into s plus twice zeta omega n, and it is directly connecting to this. This is your r of s and this is your c of s and this is your h of s equal to 1. और यही तो दिया है, ये पूरा CLTF है. CLTF मतलब if I will apply here GS upon 1 plus GSHS, देख रहा GS upon 1 plus GSHS, ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक तो प्लस माइनस है. क्या है ये प्लस माइनस? माइनस ऑलरेडी लगा दिया सर आपने, माइनस ऑलरेडी लगाया है ना आपने. ये देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट आ गया है, इसको हटा देते हैं. डॉट डॉट कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे. चलिए तो ये आ गया है आपका h of s equal to 1. अब when I will apply here n upon b plus n या फिर gs upon 1 plus gshs तो मेरे को CLTF मिल जाएगा. I will get the CLTF from the OLTF. Yes sir. अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, the velocity error constant, मतलब एग्जामिनर सिंपली आस्किंग kv वैल्यू, और kv का फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये हमारा मेथड नंबर 1 है. इस क्वेश्चन को अभी हम मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं. तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s into g of s होता है सर. और g of s क्या है सर, हमको g of s डायरेक्टली नहीं दिया था लेकिन हमने g of s को फील कर लिया, विजुलाइज कर दिया, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ना. तो डायग्राम हमको पता है, GS हमको पता है, ये पूरा वैल्यू GS है सर. ये गोला GS है. पुट कर दो यहाँ पे. तो when you will put it you will get limit s tends to 0 s into g of s is nothing but sir omega n square upon s into s plus twice zeta omega n, and you will get ss equal to 0. So when you will put s equal to 0 here you will eventually get omega n square upon twice zeta omega n. This omega n and this omega n get cancelled, so you will get omega n upon twice zeta. So omega n upon twice zeta, it means correct answer option number A for Ahmedabad only. Correct answer is option number A guys, omega n upon twice zeta. This is the method number 1, easiest method. Definitely in the examination hall we should give the preference to this method only. But just to make your concept strong, the same question I want to solve by using the method number 2 also, and that is nothing but, as I told you earlier in my GATE classes, कि whenever directly CLTF is given to you, whenever directly closed loop transfer function is given to you, how can you directly solve? I am first writing the formula here. So this formula you need to use. Steady state error ESS is nothing but limit s tends to 0 s r of s, in the bracket you should write 1 minus ka closed loop transfer function CLT. This will directly give you ESS. I am solving the last question only, and we know that whenever examiner is asking for the velocity error constant, it means input is by default ramp only. मतलब ये कि KP के लिए इनपुट जो है वो होगा हमेशा बाय डिफॉल्ट स्टेप इनपुट, KV के लिए रैंप इनपुट एंड KA के लिए पैराबोलिक इनपुट. सो ऑलवेज रिमेंबर KP विल बी डेडिकेटेड फॉर द स्टेप इनपुट, KV मतलब velocity error constant will be dedicated for the ramp input, and KA, that is acceleration error constant, is dedicated for the parabolic input. Now tell me कि सर in this question हमको input तो नहीं दिया था, input का वैल्यू नहीं दिया था,
बिकॉज एग्जामिनर हमको केवी का वैल्यू पूछ रहा था, सो केवी हैज ओनली सिग्निफिकेंस फॉर द रैंप इनपुट, और रैंप इनपुट का मतलब क्या, हम टी यू टी रैंप इनपुट का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर बिकॉज ऑफ रैंप इनपुट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट 1/s²। अभी हमको केवी निकालना है, बट मैं सेकंड नंबर मेथड से पहले ईएसएस निकालूंगा, एंड वी ऑल नो दैट कि सर ईएसएस तो 1/kV होता है, तो इफ समहाउ यू कैलकुलेट ईएसएस देन केवी को निकालने के लिए 1/ESS कर देंगे तो केवी आएगा ना। दिस इज अ लेंथी मेथड, आई एम टेलिंग यू, ऑलरेडी वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग मेथड नंबर 1। ये मेथड नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी वेज टू थिंक इन द एग्जामिनेशन हॉल। So when you will put this, what you will get, ESS equal to, you will get limit s tends to 0, s, what is R of s? R of s you will put here 1/s², 1 minus the CLTF value which is given to me, this is CLTF. CLTF means omega n square upon, so shall I write here omega n square upon s square plus twice zeta omega ns plus omega n square. This value only I need to put, sir. Now I will see, sir, after calculation, can I cancel 1s part? So 1s and 1 power get cancelled, and here I am left with 1/s. Just take the LCM, so you will get s square plus twice zeta omega ns plus omega n square minus omega n square upon, you will get here s square plus twice zeta omega ns plus omega n square. And what you will observe कि sir these two part get cancelled. Now do I have a scope to take common s here? Yes sir, s common ले सकते हो आप. So once you will take common limit s tends to 0 1/s outside, then you will take common s. What is left inside? तो आप बोलोगे sir s plus twice zeta omega n is left inside upon s square plus twice zeta omega ns plus omega n square. So don't you think here this s and this s get cancelled out? And once you will put limit s tends to 0, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, और एक ओमेगा एन से ओमेगा एन कट गया, और आपको पता है ये वैल्यू क्या आया, सर ये वैल्यू तो ईएसएस का आया, this entire value whatever we got, don't you think it is ESS? So ESS आया twice zeta upon omega n. So what will be KV? Sir KV हो जाएगा 1 upon ESS. So can I finally write KV is nothing but omega n upon twice zeta? Yes sir, 100%. Omega n upon twice zeta. It means this entire value only we got ना. Omega n upon twice zeta तो हमारा आंसर है, देखो जरा. Omega n upon twice zeta ही तो हमारा आंसर है. So this is how we hence prove answer remains same, method is different. Answer remains same, methodology is different, method is different. Is this clear प्यारे बच्चों? चलिए, so बात कर लेते हैं एक और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन का, that I been asked in engineering services 2003, और ये why I told it's very good question because here two concept merge. Whenever multiple concept merge in a single question, तो क्वेश्चन का फ्लेवर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट फील डिफिकल्टी टू सोल्व सच प्रॉब्लम। आइए बात कर लेते हैं। कंसीडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम शोन बिलो, द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर टू चेंज इन द पैरामीटर k and the parameter a with ramp inputs are respectively. सो आपको सेंसिटिविटी फाइंड करनी है, बट किसके रेस्पेक्ट? सेंसिटिविटी के और ए के रेस्पेक्ट में करनी है, बट सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट? सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर। तो आपका पहला टास्क यहां क्या हो गया? योर फर्स्ट टास्क, यू शुड फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फर्स्ट, यू शुड कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर फर्स्ट। एंड डू यू नो गाइस, डू यू नो कि सर स्टेडी स्टेट एरर for the unity feedback system type 1 system, ramp input is nothing but 1/kV, is nothing but 1/kV ramp input given है यहाँ। तो आप डायरेक्टली 1/kV करोगे क्या? यस सर, डायरेक्टली 1/kV करेंगे ना हम, तो हमको डायरेक्ट 1/kV करना आता है सर, क्या बात कर रहे हो? व्हाट इज kV बच्चों? सो यू विल राइट सर kV is nothing but limit s tends to 0 s into g of s, ये तो होता है kV। यस सर, ये kV होता है। So what will be kV guys? Your kV value is nothing but limit s tends to 0 s into gs, तो यहाँ है s, and gs value is nothing but k upon
s into s plus a. So don't you think this s and this s get cancelled? So your kv value is nothing but k by a. अब देखो kv का वैल्यू क्या है, k by a आया, बिकॉज हमने kv का वैल्यू जब s लिमिट s टेंड्स टू 0 s ds अप्लाई किया ना, तो ये वाला s ये दिख रहा है ऊपर, numerator s will get cancelled with the denominator and you will get k by a is kv. But what is error ESS? 1 upon kv, sir. And kv value when you will put here k by a, eventually you will get a by k. So ये जो a by k आया है ये क्या है? ये steady state error है सर. So steady state error को हमने यहाँ पे एक बॉक्स में लिख दिया, it is nothing but a by k. अब देखो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूं, यहाँ स्पेस नहीं है. So steady state error को हमने लिखा है a upon k that we derived in the last slide only. जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना कि सर kv का वैल्यू आया था k by a और एरर के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको हमने उल्टा किया, उल्टा पुल्टा कर दिया सर, तो 1 by k by a नथिंग बट a by k आया सर. अब देखो, अब हम बताएंगे आपको सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. सेंसिटिविटी s अल्फा बीटा is nothing but beta upon alpha del alpha upon del beta, where alpha is a variable, where अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, अभी थोड़ी देर में आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में, है ना. पहले हम ये लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट है, दिस इज सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट. सो अल्फा इज ए वेरिएबल, अल्फा इज ए वेरिएबल, अल्फा इज ए वेरिएबल दैट चेंज इट्स वैल्यू. Alpha is a variable that change its value. Alpha is a variable that change its value, and beta is a parameter. Beta is a parameter that will change the value of alpha. That will change the value of alpha. That will change the value of alpha. जो कि अल्फा के वैल्यू को चेंज कर देगा. देख रहे हो आप अल्फा बीटा. अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ ध्यान से जरा देखना, ध्यान से. तो यहाँ पे S हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना है सेंसिटिविटी ऑफ द ESS, सेंसिटिविटी ऑफ द ESS विथ रेस्पेक्ट टू K और A. ये तुमको फाइंड करना है. तो एक बार हम विथ रेस्पेक्ट टू K करेंगे और एक बार A करेंगे. तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रेस्पेक्ट टू K. ठीक है, तो हमारा पहला सब हेडिंग क्या हो गया सर, देखो ना, विथ रेस्पेक्ट टू K पहले निकालना है. देखो पैरामीटर K एंड A रेस्पेक्टिवली, तो पहले k निकाल लेंगे सर. ओके सर, ओके सर, ओके. तो विद रेस्पेक्ट टू k में अब हमारा अल्फा क्या हो गया सर, अल्फा तो हो गया आपका स्टेडी स्टेट एरर और बीटा का मतलब पैरामीटर हो गया k. अब ये बॉक्स का वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक बॉक्स कर देना ताकि हमारा स्पेस मिल जाए. डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड और ले लेंगे अदरवाइज. तो s अल्फा, अल्फा का मतलब क्या लिखो सर, आप लिखो यहाँ ESS, यहाँ लिखो आप k. सो व्हेन यू विल अप्लाई दिस, डोंट यू थिंक k विल बी कम इन न्यूमरेटर. सो के अपन आपको सिंपली बस केवल वो अप्लाई करना है. अब आप ये करोगे तो क्या लिखोगे आप, डेल ESS अपॉन डेल के विद रिस्पेक्ट टू डेल के. नाउ आपको ESS का वैल्यू पता है सर, ये रहा ESS का वैल्यू a by k है सर. तो पुट कर दो ना यहाँ पे a by k. क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है सर. दिक्कत नहीं है तो करो पुट, कर दिया सर, पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. a by k विद रिस्पेक्ट टू k. Differentiation. So once you will do differentiation, you will get k square by a. And what is the differentiation of a by k with respect to k? So a will be working as a constant, and when you will differentiate, you will get minus ka 1 upon k square. So don't you think k square get cancelled, a get cancelled, so final answer is -1. क्या बात कर रहे हो सर, मजा ही आ गया सर. -1 क्या बात कर रहे हो. यस, तो k के रेस्पेक्ट में सेंसिटिविटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर विथ रेस्पेक्ट टू k हमने पहले k के लिए निकाला था, तो k का आंसर आया है -1. और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है k के रेस्पेक्ट में -1. करेक्ट आंसर फॉर श्योर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही होगा. बट स्टिल हम यहाँ पे 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, हम आगे चल सकते हैं. बट बिकॉज वी आर इन द लर्निंग स्टेज, सो सेकंड वाले को भी थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं. सेकंड वाले के लिए मैं एक और स्लाइड लेता हूं यहाँ. तो हमको इस बार निकालना है सेकंड क्या बच्चों, तो आप बोलोगे सर विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है इस बार. तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा SESS विथ रेस्पेक्ट टू ए. तो आप लिखोगे इसको a अपॉन ESS डेल ESS बाय डेल a. यही तो लिखेंगे सर, बिल्कुल सर यही लिखेंगे. एंड वी ऑल नो दैट, अब मैं केवल लास्ट स्लाइड से ये वैल्यू पुट कर रहा हूं. जो भी ESS हमको लास्ट स्लाइड में मिला था ना, क्या ESS a by k था, बस वैल्यू पुट कर दिया यहाँ.
अब बताओ जरा फटाफट से, तो ये होगा सर आपका SESS with respect to A is nothing but A upon ESS value is eventually A by K only, and this time also del ESS is nothing but sir A by K, है ना? Should I write here A by K? Yes sir, should write A by K and with respect to A only, this time A. So बताओ जरा फटाफट से, क्या ये A कैंसिल हो गया तो K ऊपर आ गया? क्या ऊपर आ गया सर? और देखो 1 by K बाहर गया. Now what is the differentiation of A with respect to A? क्योंकि 1 by K constant, so A का A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और K by K कैंसिल होकर 1 आएगा. तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -1 और 1, और वही तो ऑप्शन में आया था. देखो ना, देखो ना, -1 और 1 ही तो आया था ऑप्शन. तो एक बड़ा ही शानदार ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. Why? Because why it is beautiful? Because two different concept. One is steady state error and the second is sensitivity concept, है ना? तो both the concept has been merged here, है ना? So that is why this question is important. चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों. आइए, so let's solve the next question. तो देखो, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, if you are from the north side of India, east side of India, west side of India or south side of India, these lectures are equally important for you and no one can stop you from the learning. आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती समझने से. If you have a pure intent to learn, अगर आप सुन रहे हो अच्छे से, if you are a good listener, no one can stop you. जो मेरी क्लास में सुन सकता है ना और पेशेंस रख के सुन सकता है, वो समझ सकता है. All the things I will make it just like 2+2. आप भूल ही नहीं पाओगे. आप 2+2 को भूल के बताओ जरा. आप ये बताओ कि सर 2+2 मेरे को नहीं आता, बताओ ना. 2+2 आएगा ही आएगा. इसी तरह से आपको रूट लोकस आ ही जाएगा. राउथ हर्विच मेथड, नाइक्यूज प्लॉट, पोलर प्लॉट, जो भी पढ़ाओगे, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट्स लाइक कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, इवन फॉर द EMT, इवन फॉर द माइक्रो प्रोसेसर और द इंजीनियरिंग सर्विसेज or maths and aptitude, or even the other teachers, those who will teach you at this GATE Study 5 platform, Rajneesh sir, Nitin sir, all are having, Nitin sir having more than 12+ year teaching experience, Rajneesh sir having more than 15+ year teaching experience. These all are my colleagues and we have taken classes across the India in 30+ cities together. जब मैं अहमदाबाद क्लास लेता था तो मेरे पास वाली क्लासेस में, जब मेरा इधर कोई सब्जेक्ट चल रहा होता था तो अदर क्लासेस के अंदर अदर टीचर्स क्लास ले रहे होते थे. उनमें से जो टीचर्स थे, जो जिनका बहुत ही शानदार फीडबैक है, ऐसे टीचर्स आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं. एंड दोज हु ऑलरेडी टॉट द सब्जेक्ट मोर देन 100 टाइम्स, दोज मेंटर्स गोइंग टू टीच यू. Okay, dear student, so don't miss the opportunity to learn from India's top educator. If it is your wish to join PSUs, or if it is your wish to make proud on yourself, not only you, your parents will also feel proud on you if you will make a double-digit rank in the upcoming GATE examination. And अगर आपको कुछ कमी नहीं रखना अपनी प्रिपरेशन में, if you want to get more than your expectation, today you can join the GATE Study 5+, so that in future you will have proud and you will feel that कि sir on a right time I took the right decision. That is why even in the third year or even before the completion of my BTech, so many students are attempting the exam in third year only, because you know that in 21 GATE 2021 के बाद IIT Bombay only allowed the students, a third year student can also write the GATE exam. Earlier 21 से पहले ये फाइनल ईयर स्टूडेंट और जो पास आउट स्टूडेंट है वही गेट एग्जाम लिखते थे, और उससे पहले 2009 से पहले भी थर्ड ईयर स्टूडेंट अलाउड था. लेकिन 2009 के बाद और 2021 से पहले वाले टाइम के अंदर केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वही गेट लिख सकते थे. बट अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अलाउ है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है. अरे इस क्वेश्चन को तो उड़ा दो हवा में यार. द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द टाइप 1 सिस्टम स्टेप इनपुट. अब ये क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड में नहीं सोल्व कर रहे हो हवा में, तो देयर इज ओनली वन रीजन कि आपको वो टेबल के बारे में नहीं पता. इफ यू नो द टेबल, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विदाउट टचिंग नोटबुक एंड पेन. अब बताओ जरा कि व्हाट इज द टेबल सेज दैट. सर टेबल बोला था आपने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक. अब बताओ यहाँ पे क्या है. स्टेडी स्टेट एरर फॉर द टाइप 1 सिस्टम मतलब विच रो, सेकंड रो, and step input मतलब which column, first column. Second row first column will intersect at 0 only. Correct answer is 0, मतलब option number Bombay. Correct answer is 0 means option number Bombay only.
आई होप दिस इज क्लियर टू यू प्यारे बच्चों, यस और नो? ये लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बिकॉज आई थिंक इफ यू विल मोर सीरियस देन आई विल ऑल्सो, because right now I am only look like excited or enthusiastic to teach you. If you also having the same feeling, it should be win-win situation from both side. तो अब भी आप फ्यूचर में अगर चाहते हो कि सर आप हमको ईएससी के पोलर प्लॉट के क्वेश्चन भी कराओ, नाइक्यूज प्लॉट भी कराओ, बॉडी प्लॉट, रूट लोकस, सारे टॉपिक वाइज आप हमको पीवाईक्यू सॉल्व कराओ, तो प्लीज लाइव में अटेंड करें एंड अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें. एंड इफ यू आर माई एक्स क्लासरूम स्टूडेंट, even from since 2009 across the 30 plus cities in India, I have taught for the GATE exam. तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, then just share your experience in the comment section so that the future learner will also get to know कि how much they will get the benefited by attending Ankur Sir classes. Now, this is the last question of today's class. Which of the following steady state error for the step input applied for the unity feedback system? इसका मतलब आपको यहाँ पे h of s का वैल्यू तो 1 दे दिया सर. With the open loop transfer function, GS वैल्यू आपका ये है, और ऐसे GS वैल्यू 10 upon s square plus 14s plus 15. मतलब ये आपका OLTF है. This is your OLTF. और आपको पता है कि सर इसका टाइप क्या हो गया? टाइप मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल लाई एट ओरिजिन कितना है सर? नहीं है सर. ओपन लूप पोल लाई ओरिजिन पे है ही नहीं. ओरिजिन पे एक भी पोल नहीं है सर. इट मींस टाइप इसका जीरो है सर. टाइप जीरो मतलब एरर विल बी 1 upon 1 plus kp. Type 0 means steady state error should be 1 upon 1 plus kp. And what will be the kp value, guys? Your kp value is nothing but, देख रहे हो? Your kp value is nothing but limit s tends to 0, and kp value is limit s tends to 0 gs only. So just substitute the value. Limit s tends to 0, gs value is nothing but 10 upon s square plus 14s plus 50. So once you will put this value wherever is s 0 0, so don't you think it is 10 by 50, 0 0 cancel, so 1 by 5. So क्या kp का वैल्यू 1 by 5 आया? yes sir, 1 by 5 आया. तो बताओ ESS क्या आ गया? तो ESS आ जाएगा सर 1 upon 1 plus 5, जो कि LCM के बाद हो जाएगा सर 5 upon 6. बोलो अब 5 upon 6 जो होगा फिर 1 से कम आएगा, 0.83 के आसपास आना चाहिए. एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको यहाँ पे 0.83. तो क्या आंसर बी फॉर बॉम्बे आ गया? क्या करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे आएगा प्यारे बच्चों? जरा बताओ यार. देखो ऐसे आसान क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए, आपको सोल्व करने चाहिए. बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही आएगा सर. चलिए, सो दैट्स ऑल प्यारे बच्चों फ्रॉम टुडेस क्लास. मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था आज, बट आपका रेस्पॉन्स देखते हुए वी आर एंडिंग द क्लास राइट नाउ हियर ओनली, because response means I will be more happy if you will interact in the live manner. Okay. However, because it is a new platform, because earlier you have seen my videos in different platform, तो ये एक नया we have started, so that is why very rare students or many few students are aware about it, but definitely in the upcoming time, and then even in the next 10 to 15 days, you will definitely get to know about this platform. So प्यारे बच्चों जरा maximum लोगों तक share करें and try करें live में attend करने का. And if you wish to prepare in a more structured way for the GATE exam, for the competition exam, for the GATE or ESE, then you can must visit our website, that is study5plus.com, and here you will get all the courses, elite batch for EC Electrical IR. अगर आप EC Electrical IR से हो तो यहाँ पे आपको पूरा comprehensive courses मिलने वाले हैं, जहाँ आपको 800 plus hours का classes मिलेगा. आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये सारे features आप पढ़ सकते हो. All these features you will get, and here you will get all the courses. यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं 800 plus live classes from 0 to mastery level, recorded videos, class notes, 4500 PYQs you will get, chapter wise practice question, chapter test, subject test, full length mock, short trick smart approach, marathon session, पर्सनल गाइडेंस एंड 1-to-1 मेंटरशिप. ये सब कुछ आपको मिलेगा एलीट बैच में, जहां आपको अक्रॉस द सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे. इफ यू आर फ्रॉम ईसी, देन यहां आप AS10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% फर्दर ऑफ मिल जाएगा. एंड हियर ऑल दीज फीचर्स आई ऑलरेडी कवर्ड. कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर किए जाएंगे? All these subjects we are going to cover in a most comprehensive way. And if you are in second year or first year, and if you will start your GATE preparation early, then definitely you will have an advantage and you can go ahead from many other students
सो बच्चों अगर आप सेकंड ईयर में हो देन दिस इज द परफेक्ट टाइम बिकॉज यू विल हैव a plenty of time for the practice and revision and there is a high chance that even in the third year attempt you can make 50 marks and in the final year attempt you can make more than 75 marks. So double digit rank मतलब आपकी इंजीनियरिंग से पहले आपके पास गेट स्कोर कार्ड होगा और वो डेफिनेटली आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा. सो इफ यू वांट टू become celebrity in your college, जो स्टूडेंट थर्ड ईयर, if you are able to make a double digit rank in the third year itself, अगर आपने अपने थर्ड ईयर अटेम्प्ट में ही डबल डिजिट रैंक बना दिया ना, तो पूरे फाइनल ईयर में जब बाकी सब लोग क्वेश्चन, सब स्टूडेंट जो होंगे वो टेंस होके घूम रहे होंगे, वो नर्वस होंगे, वो कैंपस प्लेसमेंट की तरफ भाग रहे होंगे, जहां पे वो 4 लाख 5 लाख पैकेज के लिए काफी मेहनत कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, वहां आप डबल डिजिट रैंक मतलब आप वहां एज ए सेलिब्रिटी होंगे, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी, आपके प्रिंसिपल आपका एग्जाम्पल देंगे, आपका नाम बकायदा नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा कि ये एक्स स्टूडेंट का गेट में इस ब्रांच में डबल डिजिट रैंक आया है, और आप बाकी लोगों को गाइड कर रहे होंगे, आपको स्टेज बुलाया जाएगा और बताया जाएगा कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो. बात समझ में आ रहे हो? सो दिस इज लाइक यू विल फील द फीलिंग ऑफ सेलिब्रिटी अगर आपने गेट रैंक निकाल दी. ओके प्यारे बच्चों, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आप सेकंड ईयर में हो, ये सारे सब्जेक्ट अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, तो ये सब्जेक्ट आपको नॉट ओनली गेट में हेल्प करेगा, बट ऑल्सो दिस सब्जेक्ट विल हेल्पफुल फॉर यू एज फार एज सेमेस्टर एग्जाम लर्निंग इज कंसर्न, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस is concerned, and practice question, and you will also get benefited in the campus placement and even the other competition examination wherever these syllabus and these subjects are mentioned. तो अगर एक बार आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया, एनालॉग पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ लिया, तो उसके जो क्लासरूम नोट्स बनेंगे ना 400-500 पेजेस के, all notes are very much helpful to crack the all competition examination across the India. पूरे इंडिया में जो भी टेक्निकल एग्जाम है, चाहे वो स्टेट पीएसयू ले लो, गेनको, बेस्कॉम, ट्रेनको, आरआरबी जेई, एसएसबी जेई, जहां भी टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, अगर आपके पास उस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो वो आपको मल्टीपल एग्जाम में हेल्प करता है. ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन.